Come on, dear students. In today's session, I am going to start a new chapter for you. This is the first chapter of civics. Power sharing. We will try to understand about power sharing in democracy. Before this, I want to say you something. This is regarding your study. This is my suggestion to all of you that you must make a serious study in this lockdown period. आप घर पे रहते हो, आपका प्रमोशन क्लास 10 में हुआ है एंड दिस क्लास 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर. यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसका रिजल्ट, इसकी स्टडी, इसमें गैदर किया हुआ नॉलेज, ये सारे आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. इसलिए दिस इज माय सजेशन फॉर यू दैट यू मस्ट मेक अ गुड स्टडी एट योर होम. Fortunately, this is the period of lockdown where you have not to go out from your home, and so this is a golden period for you. You must utilize this golden period in a very good manner. इसको एकदम प्लान करके आप एक प्लान करो कि कितने घंटे स्टडी करनी है, क्योंकि सारा पीरियड तो घर पे अभी रहना है, सारा पीरियड खाली है, तो इसको एक तरीके से यूटिलाइज करना ये आवश्यक होता है. नाउ कम ऑन एंड सी अबाउट पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग is inevitable in democracy. Only democracy is that type of government where power is shared among different institutions, different organs of the government, of the states. Not any other type of governing system power can be shared. अगर एनार्की है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, तो कहीं भी पावर का शेयरिंग नहीं किया जाता है. वो सारे के सारे पावर कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होते हैं, वही सारे पावर को यूटिलाइज करता है. लेकिन डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि यहाँ पावर को हम शेयर करते हैं स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स में. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू what definition of power sharing so that you can understand this. Distribution of power among different organs of a state by accepted rules or regulation. This is called, this rules and regulation, you can say this constitution is called power sharing. In other words, distribution of power among different organs of a state by accepted constitution is called power sharing. Okay? Now you are clear on the point that power sharing means decentralization of power among different institutions or organs of the state. By this power sharing is allowed by accepted constitutions of that particular country or state. This is called power sharing. Before discussing this in very details, I want to give you some examples of power sharing in among states or among countries of the world. Here I will give you two examples of two different countries which represent
different corners, to different places, to different cultural unit of the world. First is of Belgium, which is a country of Europe. Belgium is a very beautiful and very organized, a small country of Europe. And second example is of Sri Lanka. This is a country of Asia. Okay. By taking examples of these two countries, we will try to understand how power is shared and how power sharing is possible, how power sharing is profitable to solve different problem of a country, of a state. Okay. Now take example of Belgium. I already said you that Belgium is a small country of European continents. The capital city of Belgium is Brussels. Brussels is very beautiful and very systematic capital city in the world. इसके बारे में आप समझ लो कि जब यूरोपियन यूनियन की स्थापना करी गई तो यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स ही बनाया गया। कारण था ब्रुसेल्स शहर की व्यवस्था, उसका पावर शेयरिंग के तरीके और ब्रुसेल्स जो अपना एक प्रेस्टीज पूरी दुनिया में बनाया था, इसके कारण ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चुना गया। चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बतला रहे हैं।